Good evening, sir. गुड मॉर्निंग। Sorry, good morning, sir. क्या करें, गुड मॉर्निंग में भी क्लास होती है, गुड इवनिंग में भी क्लास होती है, गुड आफ्टरनून में भी क्लास होती है। हमारी तो क्लास ही क्लास होती है। सो हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन? बाकी सब कुछ सही चल रहा है? So we have Radhika, Prerna, Poonam, Hanshika on YouTube and Priyanshu and Tirthraj on Google Meet. So whichever way you like, you are most welcome in everything. And today we are going to do an extremely important part और बहुत ढंग से करेंगे, बहुत आराम से करेंगे। कॉपी पेन अपने रख लो, अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो, पानी वानी पी लो, so that you have the absolute attention. And without wasting any time, let us begin with it. अब फालतू की बातें तो हमें करनी नहीं है, सीधा सीधा काम करना है। So here we are. Here, चलो ये ब्लैंक स्लाइड आ गई है। I hope जो भी हमने कल की क्लास में किया था, you have already done everything and you have absolutely understood how to change, how to calculate the change in oxidation state and how to find the Yes, sir. change in oxidation state and oxidation states. That's absolutely done. किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन है, अभी पूछ लो, नो अभी पूछ सर, लो। क्लियर। ठीक है ना? देखो बेटा, अभी इस समय बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, and specifically the people who are 12th pass, they have to do more effort than the students who are in 11th or 12th. Remember that. The problem with it is, मैं सीधा सा बता रहा हूं, the 12th pass student have learned many wrong things and it is very difficult to unlearn. लर्न करना आसान होता है, एक अलमारी बिल्कुल खाली है, उसके अंदर सामान अच्छी तरह जचा के रखना आसान होता है। लेकिन अगर सामान के अलमारी के अंदर फालतू का सामान भरा हुआ है, तो उसे खाली करके वापस अरेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एंड आई परफेक्टली नो, मेरे पास यहाँ पे एक अलमारी है, पूरा का पूरा मेरा सामान भरा हुआ है, एंड जब भी मैं उसको खोलता हूं, उसको खोल के वापस बंद कर देता हूं, क्योंकि हिम्मत नहीं होती उसको खाली करने की। तो दैट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अनलर्न लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, चलिए, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन इक्वेशन, और उस इक्वेशन के साथ साथ हम हर चीज समझते चले जाएंगे। कॉपी पेन रेडी रखना और लिखना शुरू करो। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास है K2C2O4 प्लस KMNO4 प्लस H2SO4 gives us the product K2SO4 plus MnSO4 plus CO2 plus H2O. ठीक है, now this is the equation that we have. Copy it down. ठीक है, और प्लीज इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश भी मत करना अभी। डोंट इवन ट्राई टू डू इट। जो कर रहा हूं उसका आराम से समझते चले जाओ। इस समय मैं आपको कुछ भी डिक्टेट नहीं करवा रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग यू ऐसे 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 करना है। यहां जाना चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ है आगे, डोंट वरी, स्टेप्स हैं सारे के सारे, बता भी दूंगा, लिखवा भी दूंगा, डिक्टेट भी कर दूंगा, सब कुछ हो जाएगा। अभी समझो। नाउ द फर्स्ट स्टेप, दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द एक्वस मीडियम, दैट इज इन वाटर। और वाटर में ये स्पीशी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती। These species will exist in a different manner. They are going to be dissociated, they are going to be ionized. So let us see how these species will exist in water. In water. Okay? K2C2O4 is a salt. It is going to dissociate. Now, मैं यहां पे stoichiometric coefficient नहीं लिखूंगा. I'm just going to write the species. यानी कि I'm going to have K plus on the left hand side, along with C2O4 2 minus. I hope there is no problem. दो पोटेशियम अगर निकाल दोगे तो there is going to be 2 minus charge. Is it Yes, clear? sir. यस सर, क्लियर। ठीक है, so KMnO4 is also going to get dissociated to form K plus and MnO4 minus. K plus हमने पहले लिख दिया तो दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, we simply write it MnO4 minus. So any new species that we are going to get, we are going to write. H2SO4 is going to dissociate to form H plus.
एंड आपकी मर्जी, आप HSO4 माइनस लिखो या SO42 माइनस लिख दो, योर विश, ठीक है. So these are going to be the species on the left hand side which are going to exist in the system. Okay. On the right hand side, this K2SO4 is again going to get dissociated and it's going to form K plus along with SO4 2 minus, along with Mn2 plus, along with CO2, along with H2O. Okay. These are the species which are going to be present in the right hand side. So these are the entire species which are going to be present in the system at any instant. Fine. चलो, अब यहां पर there are certain species which are non-changing on the left hand side and the right hand side. They remain as it is. And which are those species which do not change on the left hand side and the right hand side? These species are K plus, SO4 2 minus. देख रहे हो, K plus left hand side पर भी है, SO4 2 minus left hand side पर भी है. So these species do not change on the left hand side and the right hand side. ठीक है. The species which do not change in the reaction, they remain as it is. ठीक है. अब ये स्पीशी अगर as it is रह रही है तो ये है क्यों? Now these species are there to maintain the electroneutrality of the system. K plus is to balance the negative charges and SO4 2 minus is there to balance the positive charges so that the overall system is neutral. ठीक है. So we have the species which do not show any change in the reaction but are present to maintain electroneutrality of the system are termed spectator ions. Note it down. कोई कंफ्यूजन? अक्षय ठाकुर, आपके नोट्स नहीं मिलते मुझे कभी भी अपने व्हाट्सएप चैनल पर. Why don't you make the notes and send it to me? आप नोट्स नहीं बनाते? आपने अभी तक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी लिखकर नहीं भेजे हैं मुझे. देखो बेटा, मैं तो डांट मार दूंगा. मुझे 100% मार्क्स चाहिए आपसे 180 इंटू ऑन 180. अगर आप ऐसी कोई भी चीज करोगे जिसकी वजह से मुझे लगता है आपके 180 ऑन 180 नहीं आएंगे, मैं आपकी गर्दन मरोड़ दूंगा. समझे? Noted, sir. ग्रेट. तो ये हमारे Yes, पास आ sir. गया Noted. स्पेक्टेटर आयंस. अब स्पेक्टेटर आयंस अब समझ में आ गया. K प्लस एंड SO4 2 माइनस आर द स्पेक्टेटर आयंस इन दिस सिस्टम. स्पेक्टेटर आयंस हमारे पास कितने भी हो सकते हैं. मैं यहां पे KMnO4 की जगह NaMnO4 ले लेता, तो वहां पे सोडियम वुड हैव बिकम द स्पेक्टेटर आयन. यहां पर मैं H2SO4 की जगह HNO3 ले लेता, नाइट्रेट वुड हैव बिकम द स्पेक्टेटर आयन. वैसे HNO3 मैं नहीं लेता बिकॉज HNO3 इटसेल्फ इज एन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, तो वहां पे वो भी कुछ पंगा ले लेता. ठीक है. HCl मैं ले नहीं सकता क्योंकि HCl इज गोइंग टू रिएक्ट विद KMnO4 और HCl विल बिकम द रिड्यूसिंग एजेंट. तो इसीलिए हम यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं. अब अगर मान लो आप कहोगे सर फॉस्फोरिक एसिड क्यों नहीं यूज करते इस रिएक्शन में, द आंसर इज फॉस्फेट, मैंगनीज फॉस्फेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा और फिर वो प्रॉब्लम कर देगा. तो दैट इज व्हाई वी डू नॉट यूज दीज एसिड. तो यहां पे इस रिएक्शन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड बिकम्स द बेस्ट ऑक्सीडाइज बेस्ट. तो बेटा, हाँ, तो बनाए हुए हैं, कब के बनाए हुए हैं, नए नहीं बना रहे ना आप, दोबारा नहीं बना रहे ना आप. एक तो तुम्हारी एक आदत होती है, सर हमने पहले के नोट्स बनाए हुए उसी वो छोड़ दे, अब ना बनाए. क्यों ना बनाए, अभी बनाओ, दोबारा बनाओ नोट्स. ठीक है.
कोई पुराने नोट्स नहीं चलेंगे, नए नोट्स बनाओ। पुराने नोट्स बनाए हुए तुम्हारे दिमाग में कुछ है नहीं, तो नोट्स बनाने का पर्पस है तुम्हें याद करना है। ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव एज K2SO4। यहां पे आ गया हमारे पास। चलो अब लेट अस फाइंड आउट कि किन स्पीशी में चेंज एक्चुअली आ रहा है। ठीक है, किस किस में चेंज आ रहा है। सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल लो, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे। अब स्पेक्टेटर आयंस की निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट चेंजिंग एट ऑल। बता रहा हूं स्पेक्टेटर आयंस की क्यों नहीं निकाल रहे, बिकॉज दे आर नॉट चेंजिंग एट ऑल। फाइन, उनका हमें कंफर्म्ड है। कार्बन लेफ्ट हैंड साइड पे +3 है, ऑक्सीजन -2 है। मैंगनीज +7 है, यहां पे ऑक्सीजन -2 है। हाइड्रोजन +1 है, सल्फर भी +6 ले लेते हैं, ऑक्सीजन -2 है। पोटेशियम +1 है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे पोटेशियम +1 है, सल्फर +6 है, ऑक्सीजन -2 है। मैंगनीज +2 है, कार्बन +4 है, ऑक्सीजन -2 है। हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -2 है। Each and every atom oxidation state I have written. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। आज आपको रिडॉक्स रिएक्शन की क्विज मिल जाएगी। 10 बजे डिस्कस कर लें? बोलो, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? एनीबॉडी? क्या हो गया? सबकी मुंह बोलती बंद हो गई है यार, इतना काम क्यों करा रहा है ये हमसे? मैंने आपसे कहा है दिन के 4 घंटे केमिस्ट्री के हैं, है ना? तो कोई दिक्कत है उसमें? ओके, सो here we have K plus C2O4 minus MnO4 minus H plus SO42 minus K plus, ये सब कुछ हमारे पास आ गया, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। नाउ सी वेयर द चेंज इज टेकिंग प्लेस, किस में चेंज आ रहा है? एक चेंज हमारे पास आ रहा है कार्बन में, ठीक है, और एक चेंज आ रहा है हमारे पास मैंगनीज में, ठीक है। जिस जिस स्पीशी में कार्बन है और जिस जिस स्पीशी में मैंगनीज है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, उनको छोड़कर बाकी सबको हटा दो, ठीक है। सर फिर से बोलेंगे? Carbon and manganese, they are showing change. Can you see that? यस सर। Okay. All the species which contain carbon and manganese, leave them. Other all species, just remove them. Just remove from the equation. That is, you ओके are सर। going to remove all the क्लियर। spectator ions and you are going to remove यस all सर। the species which are not showing any change. ठीक है, K plus गया, H plus गया, SO42 minus गया, H2O गया, and what are going to we get? We are going to get C2O4 2 minus plus MnO4 minus gives us Mn2 plus CO2. This equation contains only the species which are going to show the change and their products. Now, what is this equation known as? This equation is known as the skeletal equation. This equation is known as the skeletal equation. यस सर। क्लियर। Clear? Clear. Now,
Whenever you are balancing a redox equation, the skeletal equation formation is the first thing that you need to do. Clear? So we have just formed the skeletal equation. Now, carbon is +3. Manganese is +7. Here carbon is +4. Manganese is +2. So manganese goes from 7 to 2. Carbon goes from 3 to 4. So do I need to explain it that this part is oxidation and this part is reduction? समझ में आ गया सबको? Carbon is Yes, sir. getting oxidized, manganese Yes, is sir. getting reduced. Perfect. So here we have the equation C2O4 2 minus plus MnO4 minus gives us, okay, Ananya, once you finish off that class is going to start at 9:45. 10 मिनट के लिए आ जाना, ठीक है? सर टाइमिंग नहीं पता है, स्केड्यूल नहीं हुआ है क्लास। मेरी भी अभी शेड्यूल नहीं हुई है, बट फाइन इनफ, 10 मिनट के लिए आ जाना। यस सर, नो प्रॉब्लम। अपने डाउट्स पूछ के चले जाना, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है ना? यस सर। देखो, our sessions are not something like we have to torture. नहीं तुम ये करोगे, नहीं तुम ये करोगे. I am quite lenient, I am quite flexible, बट मुझे तुम्हारे मार्क्स चाहिए, ठीक है? अनन्या, बहुत ध्यान से टेस्ट करना। क्लियर? आप सिली मिस्टेक कर जाते हो और बहुत गलती हो जाती है इन क्वेश्चंस में। अब देखो, आपका स्कोर इंक्रीज हुआ है, आपका इंक्रीज बेटर हुआ है, तो प्लीज रिमेंबर यू हैव टू गेट 10 on 10। हर टेस्ट में आपको 10 on 10 लेने हैं। टेक योर टाइम, आराम से करो, ठीक से करो। अभी टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे ये चीजें बहुत ईजी होती चली जाएंगी, ठीक है? फाइन। और हाँ, आज शाम को 4 बजे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिमेंबर दैट, ठीक है? मेहनत तो करनी है। ओके, देन इट गिव्स अस CO2 प्लस Mn2 प्लस। यहां पे अगर हम इसकी बात करते हैं, देन इन दैट केस हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। एक इक्वेशन हमारे पास है C2O4 2 माइनस गिविंग अस CO2. Now this is the oxidation equation. Anybody has a problem with that? This is an oxidation equation. And the other equation that we have is MnO4 minus giving us Mn2 plus. Now this is the reduction equation. This is the reduction equation. So we have the oxidation equation, we have the reduction equation. Now, once we have found the oxidation and reduction equation, could you please tell me the electron change in both the equations? We have already done them. So please tell me, what is the electron change in the oxidation equation? What is the electron change in the oxidation equation? बोलो जल्दी से, लिख दो, बोल दो, बता दो। Zero. If the change is zero, then in that case it's not an +1. oxidation. नहीं। तीर्थराज फिर वही गलती कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड पे दो कार्बन है। There are two carbon on the left hand side, so you have to find the change in two carbons, not one. Sir, 2 electrons. Okay, sir, clear. The change is two electrons. 2 electrons. Okay. What is the change in the reduction equation? What is the change in the reduction equation? Right. Please understand, it's not 5, it is
-5 इलेक्ट्रॉन्स। -5 होगा। यस, रिडक्शन में नेगेटिव चेंज होता है, ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चेंज होता है। ठीक है, हाँ, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे +5 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हो। Okay, so you have got the change in the oxidation equation and the reduction equation. Fine. That was the first step. Find the change in electrons. What is the second step? Balance all the atoms other than hydrogen and oxygen. ठीक है, तो अगर हम स्टेप्स की बात करें तो what are the various steps we have? चलो मैं स्टेप्स भी साथ साथ लिखना शुरू कर देता हूं। ठीक है, the first step in balancing the equation, write the skeletal equation. That is the first step. ठीक है, second, write the oxidation and reduction equation. ठीक है, third is write the electron change in each equation. ठीक है, fourth, balance all, or balance all atoms nahi, I should say make the number of atoms on right side equal to left side except हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब कि आप लेफ्ट हैंड साइड को नहीं छेड़ेंगे, आपको बस राइट हैंड साइड के एटम्स को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर बनाना है। चाहे आपको 1/2 करो, चाहे मल्टीप्लाई बाय 2 करो, चाहे 1.5 करो, चाहे जो मर्जी करो, लेफ्ट हैंड साइड को नहीं छेड़ोगे। इज दैट क्लियर? So, left hand side we have 2 carbons, so make it 2 CO2. Left hand side we have 1 manganese. Here we have 1 manganese. Balanced. ठीक है? Clear? Next, to balance oxygen, add required number of H2O on the side deficient in oxygen. जिस साइड भी ऑक्सीजन कम है वहां पर उतने वाटर मॉलिक्यूल्स डाल दो। वाटर मॉलिक्यूल्स, ये एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल्स डालोगे आप। क्लियर? अब लेट्स सी, यहां पर हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, यहां पे हमारे पास 2 2 जा 4 ऑक्सीजन हो गए, कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। Here we have 4 oxygen, here we have 0, so quite obviously we are going to add 4 H2O. ठीक है, so with that we have just balanced oxygen. Any problems? Now, sixth one, एक बात का ध्यान रखना, to balance hydrogen, use H plus in acidic medium. ठीक है, H2O minus OH minus in basic medium. एक बात का ध्यान रखना,
H plus is equal to H2O minus OH minus. आप ये भी कह सकते हो कि in the basic medium add water molecule on the side deficient in hydrogen and same number of OH minus on the opposite side. ठीक है? In basic medium, add H2O equal to hydrogen deficiency and same number of OH minus on opposite side. ठीक है? क्लियर? एसिडिक मीडियम में सीधा सीधा H plus डाल दो जहां पे कम है. So what we do is here we have, there is no hydrogen in the upper equation. Here we have 8 hydrogen on the right hand side. So here we are going to write 8H plus. ठीक है? Clear? Yes, sir. Now, further, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको अक्सर स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, एंड दैट इज 7th, check the sum of free charges on left and right side of equation. This must be same. ठीक है? फ्री चार्जेस कौन से हैं? देखो मैं बताता हूं. यहां पे आपके पास 2 माइनस है. ठीक है? दैट इज द फ्री चार्ज. तो लेफ्ट हैंड साइड इज -2. राइट हैंड साइड की बात करो, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है. 2 माइनस अगेन -2. तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास -2 चार्ज है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास -2 चार्ज है. द चार्ज आर इक्वल. यहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे देयर आर 8 पॉजिटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज. तो -1 + 8 इज इक्वल टू +7 का चार्ज हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है. ठीक है? लेट्स मूव टू द राइट हैंड साइड. ये है हमारे पास +2 minus 5 into -1. This is equal to again +7. So left hand side is +7 charge, right hand side is +7 charge. The charges are equal. ठीक है? कभी कभी स्टूडेंट पूछते हैं, सर अगर ये चार्ज इक्वल नहीं आए तो? बेटा अगर एक चार्ज ऐसे इक्वल नहीं आए तो अपने पेज के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे अपना पेन ऐसे रखना पेन ऐसे. ठीक है? और राइट बॉटम कॉर्नर तक ऐसे लाइन लेके जाना. ठीक है? फिर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर लाइन रखना टिप ऐसे, और उसको राइट कॉर्नर पर लेके जाना. ठीक है? और फिर दोबारा शुरू करना. क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ये इक्वल ना हो. अगर ये इक्वल नहीं है, दैट मीन्स आपने गलत बैलेंस किया है. इज दिस क्लियर? ठीक है? Yes, sir. नाउ दीज टू इक्वेशंस आर बैलेंस्ड. ठीक है? नाउ वी नीड टू ऐड द टू इक्वेशंस. तो चलिए अब जरा इन इक्वेशंस को ऐड कर दें. So let's add these equations. When we add these equations, how they are going to be added? हमारे पास है C2O4 2 minus gives us 2CO2 plus 2 electrons. That's one equation. The second equation is MnO4 minus plus 8H plus gives us
Mn2 plus 4H2O plus नहीं minus 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फाइंड द LCM of the electron change in both the equation। ठीक है, find the LCM, least common multiple, of the electron change in both equations and multiply the equations by appropriate numbers to make electron change magnitude। साइन की मतलब नहीं है, ठीक है। यहां पे हमारे पास नंबर्स आर 2 एंड 5। 2 एंड 5 का एलसीएम होता है 10। क्लियर? सो दिस इक्वेशन will be multiplied by 5, this equation will be multiplied by 2, ठीक है, so that we are going to get the equation as 5C2O4 2 minus gives us 10CO2 plus 10 electron, 2MnO4 minus plus 16H plus gives us 2Mn2 plus 8H2O minus 10 electron। Clear? Next is add the two equations. Just add the two equations. अगर हम ऐड करते हैं तो सबसे पहली बात ये 10 इलेक्ट्रॉन्स और ये 10 इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसल्ड आउट। फाइनल इक्वेशन मस्ट नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड वी गेट द फाइनल इक्वेशन एज 5C2O4 2 minus plus 2MnO4 minus plus 16H plus gives us 10CO2 plus 2Mn2 plus 8H2। ठीक है, got it? Yes, And sir. then we Clear. have the last step, check the charges। कहीं ऐसा ना हो कि आपने एडिशन करने में गलती कर दी हो फिर चार्ज इंबैलेंस हो गए हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? No, sir. नो सर।
Any kind of doubts? No, sir. Akshay Thakur has sent his notes. And now this equation is balanced. Okay? So what we need to do when we have to talk about the balancing of redox equation, we have to talk about the spectator ions, the ions which are present in the solution only to neutralize the charges and do not take part in the reaction are termed spectator ions. These do not show any change in oxidation state. So that's what we have as spectator ions. Skeletal equation, we have already talked about. The equation which contains the species undergoing oxidation reduction along with their corresponding products in the form in which they exist in the solution or system are named as skeletal equation. How to write the skeletal equation I have already told you. ठीक है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बारे में हम चिंता नहीं करेंगे और ये इस तरीके से हम लिख देंगे. Find the atoms which show a change in oxidation state. ठीक है? स्पेक्टेटर आयंस को हटा दिया हमने, स्केलेटल इक्वेशन बना दी है, रेडॉक्स इक्वेशन को लिख दिया है, ऑक्सीडेशन इक्वेशन लिख दिया है, रिडक्शन इक्वेशन लिख दिया है, ऑल एटम्स को बैलेंस कर दिया है. सारे के सारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं. कोई प्रॉब्लम? No, sir. परफेक्ट. तो जरा कुछ इक्वेशंस बैलेंस कर लें. Yes, sir. Simple equations. AS2S3 plus NO3 minus, ठीक है, gives us ASO4 3 minus plus S plus NO. बैलेंस करो. We're constantly in touch with the UNO. The circumstances are such that we need to be prepared for all kinds of eventualities here. हर हादसे के लिए तैयार रहना होगा. I'm the General of Pakistan Army. Don't you know the Geneva Convention? Damn it! मैं इस वक्त हिंदुस्तान में हूँ. I'm a POW, prisoner of war. Arrest me. Did you follow the Geneva Convention at Ram Tekri? Did you?
Look at my men! हालत देखो उनकी! तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि अभी तक जंग शुरू नहीं हुई, वरना मेरी और आपकी मुलाकात यहाँ नहीं, वहां लाहौर में हो रही होती। और वहां जनरल साहब, ये जो गर्दन है ना आपकी, ये कर्नल रावत के हाथों में होती। But as of today, the war hasn't even started yet. There is no war diary, no arrest memo. In fact, officially, हम यहां है ही नहीं. So you are playing games with me. अब मैं नजर फेरूंगा और तुम और तारा सिंह अपना हिसाब किताब पूरा करोगे. हाँ, गदर मूवी देख रहा था। भूल गया था कि आपका चल रहा है ये। बैलेंस हो गया? आंसर।
क्या हुआ, बैलेंस नहीं हुई इक्वेशन? कर रहे हो ना बैलेंस? Doing it. Go ahead and do it. This is a skeletal equation.
This in itself is a skeletal equation. नीट का एग्जाम नहीं होगा? ये क्या बात हुई? कुछ भी बोल रहे हो क्या? Maybe he has said something about the PG exam. Because they might, I don't know. Let's watch it, what happens. But anyway, कोई ना कोई तो एग्जाम होगा. So what's the problem?
Okay, then let's start balancing it. Here, the net oxidation state is 0. Here, nitrogen has a +5 oxidation state. Here, arsenic has a +5 oxidation state. Sulfur has an oxidation state of 0. Nitrogen has an oxidation state of +2. Okay. So when we find this part is oxidation, this part is reduction. Okay. Now we get the two equation. As2S3 gives us ASO4 3 minus plus S, and we have NO3 minus gives us NO. ठीक है? स्पोर्ट्स सुनिए बेटा, आपने इसे H प्लस और H2O कहां से आ गया बेटा? चेक इट आउट. H प्लस और H2O चेक करो एक बार. नहीं, ठीक है. ठीक है. ओके. नाउ यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? There is a change of 10 electrons, and here is a change of 3 electrons. Okay. Balancing it, here it will turn out to be 2 and here it goes 3. अब जब इसको overall करना पड़ेगा, then here it is going to be multiplied by 3 and here it is going to be multiplied by 10. Final balanced equation अगर आप लिखो, नहीं अभी इसके अंदर water को करना है ना, यहाँ पे there are 2 into 4, 8 oxygens. So here it is going to be 8 H2O. ठीक है. And here it's going to be 16 H plus. Here we are going to have plus 2 H2O, and here we have 4 H plus. ठीक है. Now to balance it, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है into 3, इसको मल्टीप्लाई करना है into 10. ठीक है. Now we have 3As2S3 plus 24H2O plus 10NO3 minus. एक बार चेक कर लें इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 into 3 6 minus, and we have 10 minus 16 and 16 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है बिल्कुल. यहाँ पे 4H plus 1 minus 3 plus minus 3 इलेक्ट्रॉन 3 plus. ठीक है. चार्जेस बैलेंस्ड है. ठीक है. plus 40H plus gives us 6AS2O4 3 minus ASO4 3 minus plus 9S plus 48H plus 10NO plus 20H2O. ओके. चलिए अब जरा कैंसिल आउट कर दें जो हम कर सकते हैं. 40H प्लस और 48H प्लस को हटा दें तो 8H प्लस बच जाएगा. ठीक है. 24H2O और 20H2O को हटा दें तो हमारे पास 4H2O बच जाएगा.
गॉट इट? तो ये तो हमारे पास एक इक्वेशन की बैलेंसिंग थी। ठीक है, NO प्लस के बाद H2O, 20 H2O। ओके, चलो अब आपको एक और तरीका बताता हूं। यहां पर वी हैव टॉक्ड अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन इन अ लॉन्ग मेथड। लेट्स बैलेंस दिस इक्वेशन इन अ सिंगल लाइन अंडर 30 seconds. लेट्स से हमारे पास है AS2S3 प्लस NO3 माइनस gives us ASO43 माइनस प्लस S प्लस NO। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड बाय दैट यू कैन बैलेंस। दैट्स एक्सीलेंट पूजा। अब सचिन सर भी अपने वाईटी चैनल पे क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, मैं अपने चैनल पे क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, तो आपके तो मजे आ गए, और क्या चाहिए। ठीक है ना। तो वी हैव AS2S3 plus NO3 minus gives you ASO3 minus plus S plus NO. Now how do we balance it? अब एक बात देखो यहां पर, इन दिस केस ये पूरा का पूरा है इसमें, ये देयर इज अ चेंज ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हियर देयर इज अ चेंज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां पर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, यहां पे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है।
तो व्हाट यू डू इज एलसीएम से कन्वर्ट कर दो, यानी कि आप इसे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो और इसे मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, सो बोथ बिकम 30. ओके, सो व्हाट वी गेट इज 3as2s3 plus 10NO3 minus giving us ASO4 minus plus S plus NO. Now balance as you balance the same equation. वन इक्वेशन को जैसे बैलेंस करते हैं ना, वैसे इक्वेशन को बैलेंस कर दो. यहां पे हमारे पास 6 आर्सेनिक है, सो मेक इट 6. 9 सल्फर है, मेक इट 9. 10 नाइट्रोजन है, मेक इट 10. ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है 30. राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन हमारे पास है 10 इंटू 1 10 प्लस 18 28. तो यहां पर हमारे पास एक मिनट 10 प्लस 24. ठीक है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास 24 ऑक्सीजन है. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें लिखना पड़ेगा 4H2O. ठीक है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 8 हाइड्रोजन है, तो हियर इट इज 8H प्लस. द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. ठीक है, पूछा बेटा हमारे टाइमिंग्स तो क्लैश नहीं हो रहे ना, डोंट वरी अबाउट अलाइनमेंट. अलाइनमेंट तो है पूरी. ठीक है ना, so this is what we call as oxidation number method. Oxidation number method. Balanced? Let's talk about something called disproportionation reaction. Disproportionation reaction. When you talk about the disproportionation reaction, यहां पर होता यह है कि the same species undergoes oxidation as well as reduction. Or same kind of one species undergoes oxidation, other one gets reduction. तो उसे कहते हैं disproportionation reaction. A peculiar example of disproportionation reaction would be the Cannizaro's reaction. Cannizaro's reaction, जब self Cannizzaro reaction होता है तो वो एक disproportionation reaction होता है. या फिर आपके पास है Cl2 in presence of OH minus gets converted into Cl minus plus ClO3 minus. So that is what we have as a disproportionation reaction. पूछा बेटा we are two individual people. ठीक है ना, you are going to get the best of everything. What's the problem? ठीक है ना, अब कंबाइंड वे में तो आपका टेस्ट यहां पे हो रहा है ना, टेस्ट में क्या दिक्कत है? वी आर हैविंग द टेस्ट, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, पूछा यू हैव जॉइंड एएमसीईवी और नॉट. पहले एएमसीईवी ज्वाइन करो, फिर आपके टेस्ट हो जाएंगे. ओके, अगर होगा तो जुआलॉजी के टेस्ट भी वहां पे कर देंगे, जो भी वहां पे सेशन चल रहा होगा उसके हिसाब से जुआलॉजी के टेस्ट कर लेंगे. क्या दिक्कत है? जुआलॉजी के, बॉटनी के, फिजिक्स के सारे टेस्ट हो जाएंगे. लेकिन आप पहले ज्वाइन तो करो.
और क्लासेस में तो रेगुलर आओ। ठीक है। So Cl2 plus OH minus gives us Cl minus plus ClO3 minus. This is a disproportionation reaction, और disproportionation reaction करने का बहुत आसान तरीका है, real easy way, and that real easy way is कि आप इस reactant को 2 बार लिख दो। ठीक है, इससे आप ये मान लो, इससे आप ये मान लो, तो 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट हो गए, सॉल्व हो गया। कर लोगे? प्रियांशु, तीर्थराज, अनन्या, ये स्पोर्ट्स दुनिया कौन है मुझे नहीं पता। Priyanshu, if Sachin sir also has left an academy and everybody has left an academy, it's me, यानी कि ऋतिक प्रसाद है ना, ऋतिक प्रसाद इज इट्स मी। तो प्रियांशु, आपने जो सब्सक्रिप्शन लिया था उसका क्या हुआ? हैव दे कॉन्टैक्टेड यू अबाउट द सब्सक्रिप्शन? हाँ सर, मैंने उनको कांटेक्ट तो किया। वो मुझे वहां पे तो दिखा रहा है कि 22 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है बैच। अच्छा, वो तो नहीं हो रहा। इसलिए मैंने उनको मेल किया है उनके उसके बारे में। ओके, ठीक है। Yes, Swati ma'am also late. But I am not aware of it. You can ask Swati ma'am about it. Okay, And sir. people are telling me that Sachin sir has left. I have not talked to him, so 2 दिन से क्लासेस नहीं हो रहा। नहीं, 2 दिन से क्लासेस नहीं हो रहा तो उसका मतलब कुछ भी हो सकता है ना, तो व्हाई डू वी जस्ट गेट इनटू दैट बैंटर until unless Sachin sir himself says, और यहाँ पे Pooja is telling about on YouTube that Sachin sir is going to start the classes on YT channel from tomorrow onwards. Well, I don't know. Yes, It is sir. being told here. तो अगर अपने चैनल पे क्लास ले रहे हैं तो it means the same thing. ठीक है? Okay. So this is what we have. तो ये अब आप बैलेंस कर सकते हो ना. This is what we call as disproportionation reaction. अब एक बड़ा मजेदार सा रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्रपोर्शनेशन. कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. कॉम्प्रपोर्शनेशन डिस्प्रपोर्शनेशन का उल्टा है. Something like we have H2S plus SO2 giving us S. मतलब कि 2 reactant give 1 product. Okay? 2 different oxidation state of the same element giving the product in single oxidation state. That is what we have as comproportionation reaction. Is this clear? Yes, sir. With that, we have just finished off with the redox chapter. Redox reaction chapter. And today evening 4 o'clock. And since Sachin sir is not taking any classes, Swati ma'am is not taking any classes, no classes are there. So I believe you can do chemistry for today. ठीक है ना बेटा? Yes, sir. टाइम वेस्ट करने से अच्छा है केमिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म कर लिया जाए. तो बेटा आज फिर हम अभी मैं आपके लिए थोड़ी देर में अपलोड कर देता हूं केमिस्ट्री की रिडॉक्स रिएक्शन की क्विज. 4 बजे हम करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस. बी प्रिपेयर्ड विद दैट. यस सर। इज इट क्लियर? तो Yes, आपका sir. काम नहीं रुकेगा, आपकी मेहनत नहीं रुकेगी, आपकी कोई छुट्टी नहीं है. Okay, sir. क्लियर? तो सर इसलिए मजे मत लेना. अरे सचिन सर क्लास नहीं ले रहे, अरे स्वाति मैम क्लास नहीं ले रही, अरे अर्चना मैम क्लास नहीं ले रही, आज तो छुट्टी ना. तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं है, मैं बैठा हूं. द डेविल इज हियर. वैसे ही लोग मुझे भूत कहते हैं. ठीक है? तो मैं तो आपका गला दबा के रखूंगा. ओके देन,
Bye-bye. We are gonna meet at 4 p.m. with NCERT questions. सारे के सारे questions कर लेना. Redox के questions बहुत easy हैं. आराम से हो जाएंगे 4 बजे तक. ठीक है? Okay then. ठीक है सर. Bye-bye. बाय Take care. सर. थैंक यू सर. जी सर. ठीक है? और 10 बजे हमारा डिस्कशन है क्विज का. क्विज अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, पर पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो. ओके, बाय बाय. ओके सर.